Hello, my dear friend. Most welcome to my channel all about art. This is Mo. How are you, friend? कैसे हो तुम सब? Me? Absolutely fine. I know, friend, you must have softer texture के लिए मतलब नरम बनावट के लिए B pencil and white drawing paper है तुम्हारे पास. क्यों? क्योंकि आज क्रॉस हैचिंग जो करना है ओके क्रोटन लीफ के ऊपर करूंगी. थोड़ा टफ लगेगा लेकिन बहुत नाइस ये टेक्निक एंड लीफ भी. देखो पहले ही जान लो व्हाट इज क्रॉस हैचिंग. क्रॉस हैचिंग इज अ टाइप ऑफ शेडिंग टेक्निक whereby artists will draw parallel lines at two angles that crosses one another to create the impression of light and shadow. Friend, actually it is the drawing of two layers of hatching at a right angle to create a mesh-like pattern. Multiple layers in varying directions can be used to create texture. It is often used to create tonal effects by varying the spacing of lines or by adding additional layers of lines. Before we begin, if you get any value from this video, consider liking it and please subscribe to the channel to show your support. तुम जानते होंगे बहुत पहले से ही आर्टिस्ट क्रॉस हैचिंग टेक्निक यूज करते थे. Artists such as Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Gustav Doré, John Tenniel, Rembrandt used line and cross-hatching to create tone and highlights and three-dimensional. Master artist Michelangelo not only used a fine technique of densely spaced hatching, but also limits himself to a few carefully drawn lines when he only wants to suggest figures in a rough manner. This is my sketch. Let's make my sketch realistic. I use cross-hatching. Friend, we already made a video on hatching, the link to which is provided in the description and also at top right corner of the screen. देखो फ्रेंड, टीचर जैसे आंसर पेपर में क्रॉस करते हैं ना, ये ड्राइंग पे वैसे नहीं होगा. देखो ये फाइनल पेंटिंग, ये पोर्शन देखो, लीफ इज कलरफुल. तो ये जो स्पेस छोड़ दी थी ना मैंने, ये कलर को रिप्रेजेंट करता है. ये पेंसिल वर्क में I add cross-hatching, actually making the leaf more contrasting with 6B and 4B, 8B also. ये डार्क पोर्शन देख रहे हो ना, ये जैसे किया है ना मैंने, ये लीफ जैसे टर्न किया. नेक्स्ट देखो कार्व पोर्शन मिड रीप के साथ ऐसे किया. लेकिन इधर देखो लाइट लाइन दिया नहीं क्योंकि लाइट इधर नहीं था. ये पोर्शन देखो कैसे अलग किया वास के साथ लीफ को. लीफ का शेडो तो था ही वास के ऊपर, तभी लीफ के साथ लाइट का जो रिलेशन था इधर कोर शेडो देके ये अलग किया. फ्रेंड, व्हाट इज कोर शेडो जानना बहुत जरूरी है. इधर another part of the shadow area. फ्रेंड, जैसे आमड़ा पेन आमड़ा रहते हैं ना जब तुम एक्लिप्स ड्रॉ करते हो फिजिक्स और जियोग्राफी में, वैसे ही कोर शेडो एंड शेडो अलग होता है. फ्रेंड, मेरा एक स्टूडेंट फ्रेंडली एजुकेशनल चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. कैसे पूछना है कमेंट करके. नाउ इधर देखो, कोर शेडो और टर्मिनेटर इज द डार्केस्ट डार्क ऑन द फॉर्म एंड
it appears as a line or plane parallel to the light source, benefiting from neither darkest light nor reflected light. So friend, we draw core shadow, shade the entire shadowed region, giving it a dark value but not fully black. Look to the area of reflected region. This is the tone you need to aim for. Once shaded evenly, add the darker core shadow while keeping the reflected light in mind. Okay friend, subscribe and like जरूर कर दिया है ना friend? See you in the next video. Thank you. Thanks a lot.